एखाद्या सरकारी शाळेकडच्यान 1 किलोमिटरा भितर दुसरी शाळा नासल्यार एक सुद्धा भुरगो असल्यार सरकार ती बंद करचो ना। तेच बरोबर ते वाठारांतली एखादी शिक्षणीक संस्था ते शाळेचे पालकत्व घेता जाल्यारूय यत्न जावंक जाय म्हणून शिक्षण मंत्री पर्रीकार उलयला। सरकाराच्या यत्नांक लागून खंय सरकारी शाळांनी शिक्षणाचो दर्जो आनी भुरगे वाडटात। सरकारी शाळांनी प्री प्रायमरी सुरू जावं येता काय म्हणून काब्रालान प्रस्न काडिल्लो। जेन्ना प्रायमरी स्कूल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणून ते बिल्डिंगाची आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी जस्ट बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट फॉर एनदर पर्पज द आयडेंटिटी वील गो ऑर आयडेंटिटी वील बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल आता आमी आमची शाळा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल सिरली सपोज ती शाळा अंगणवाडी सेंटर आसली इट वील बी नोन एज अंगणवाडी सेंटर्स or it will be known as handicraft centers or village gymnasium. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मात्र ते प्रायमरी स्कूल बिल्डिंगूच म्हणून आसतली। म्हणजे एखादी जर तूं स्कूल बिल्डिंग आमी प्रायोरिटी दिल्या विमेन एंड चायल्ड बिकॉज दॅट इज ऑल्सो फॉर हे अंगणवाडी दॅट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एज्युकेशनच्या दिशेन वचणारी रिक्वायरमेंट आसा। त्यामुळे बरीचशा अंगणवाडीची कामां जी खंयच्या खंय आसताली ती त्या शाळांनी आयल्यामुळे भागल्या। That since it's a primary school and the FAD is that pre-primary is required, whether there will be a provision for a pre-primary in that same school, because pre-primary is a notion that the students put in private schools and they keep that is one form of this where the students don't go to government school. When you put them in pre-primary, they remain with them throughout the year. Anganwadi is part of it, but then they don't call it pre-primary. So whether there is a notion of putting a pre-primary, I think in Kuchane, there is one school in the entire constituency where the pre-primary was put in, I think, some 15 years back, and it's running well with number of students. The fact is, the parents keep their students there itself. Otherwise, they put it in somewhere else. So whether that provision can be thought of. First of all, maintenance has to be carried out by the organization which takes it over, whether it is government organization or private organization. Education department provides you building as it is, where it is conditioned. For certain number of years, you have to maintain it. The department will not make cost. Secondly, I can assure the House that if there is no other alternative school within 1 kilometer range, even one student, we will keep the school open. But at the same time, we have to also realize that even one teacher will cost us anywhere up to 45,000 rupees per month minimum, maybe 50,000, depending on the seniority. So if there are 2 students, it is almost like paying 22,500 rupees expenses per student. Therefore, some mechanism to take the very balanced decision is required, but no school will be closed if there is no other school within 1 kilometer. Pre-primary हो concept बरा, पण अनेक गोष्ट सांगता हांव। फाटल्या दिसांनी हांवें एक स्कीम केली जातून गव्हर्मेंट स्कूल्स वेर पेरेंटेड बाय अदर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इन द एरिया। थोड्यो शाळा 5वे पासून सुरू जाता, तांकां फिडर हे लागता सप्लाय। अशा शाळांनी गव्हर्मेंट स्कूल मेंटरिंग केल्या, म्हणजे तांचे कडेन मॅनेजमेंट टायप ताजे दिल्ले आसा आनी दे हॅव सीन टू इट दॅट क्वॉलिटी इज इम्प्रूव। दॅट कायंड ऑफ स्कीम वी इंटेंड टू डू फॉर द नेक्स्ट इयर, वेर वी वील take applications from educational institutes who are interested. तुझे इम्प्रेशन जाला आसतलें की खंय तरी तुवें स्टेटमेंट आयकला आसतलो की फुडल्या वर्सा पर्यंत 450 गव्हर्मेंट स्कुलां बंद पडटलीं। अशी पडपाची स्थिती ना। गव्हर्मेंट स्कूल सगळे आमी इम्प्रूव करता। आय वील टेल यू लास्ट 3 years द नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन गव्हर्मेंट स्कूल हॅव स्टेडिली स्टेबिलायज्ड अँड इज शोईंग अ सायन ऑफ स्मॉल इन्क्रीज, अ व्हेरी रिजनेबल स्मॉल इन्क्रीज. Even in the vernacular language, last 3 years, the number of students are growing. त्यामुळे आमकां गव्हर्मेंट स्कुलाय आसूंक जाय, पण क्वॉलिटी ताजी इम्प्रूव जावंक जाय, हाजेर आमी काळजी घेता। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। ब्रेस्तारा गोयच्या कॅटरर्स संघटनेचे लॉन्चिंग जाले। ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत कॅटरर्स ऑफ गोवाचे लॉन्चिंग सुवाळ्याक मुखेल सोयरो एफडीएचो संचालक सलीम वेलजी आशिल्लो। सुवाळ्याक टीजीबी ग्रुपाचो नरेंद्र सोमाणी आनी बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। गोयच्या कॅटरर्सांची ही पयली मोठी संघटना म्हणून येता। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एफएसएसआई ने ये प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया है। आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट बता सकते हो,
आपके उस व्यक्ति को FSSAI अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिन आपके लिए आसान नहीं है। क्वालिटी के माध्यम में आपके लिए आने वाले दिन टफ होंगे। टफ का मतलब, कठिनाई का मतलब, हर केटरर को, हर रेस्टोरेंट को, हर होटल को अपनी बिजनेस की केटरिंग में एक क्वालिफाइड आदमी होना जरूरी है। और वो आदमी आपके सिस्टम से अगर आएगा, आप उसको डिप्यूट करोगे तो वो ट्रेन होगा, तो वो आपके सिस्टम के साथ बनेगा। और एक आदमी आपके साथ जो ट्रेन जुड़ेला होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के लोगों को भी ट्रेन कर सकता है। तो आपको इस फॉस्टेक प्रोग्राम का लाभ लेना है। आपको इसमें ज़्यादा जानकारी जो चाहिए तो यू आर वेलकम टू माय ऑफिस। वी विल हेल्प यू इन ऑल इन दैट, बट वी वुड वांट दैट इन द कमिंग 1 ईयर कोई भी कार्य करना है तो उसको एक टारगेट का डेडलाइन दे। म्हापशां धुळेरात अंडर 17 भुरग्यां खातीर सुब्रतो मुखर्जी टुर्नामेंट जालो। म्हापशेच्या सेंट झेवियर हायर सेकंडरीन शिवोलेच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर हायर सेकंडरीक 4-8-0 गोलान मारले। पुराय मॅचीत सेंट झेवियरान आक्रमक खेळ केलो। गेमीक दोनूय टीमीन रंग हाडलो। 29 जूना सावन सुरू जाल्ल्या ह्या टुर्नामेंटात 18 हायस्कुलां आनी 6 हायर सेकंडरीच्यो मेळून एकूण 24 टीमी वांटेकार जाल्ल्यो। Lovely shot, lovely try, good try. Play Richard, Richard change. Shot, Richard, shot. Lovely. Too fast. Run. Go, lovely, go. Go. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।